You're just giving the snaps of a theory of machine. Yes, sir. Yes, sir. So your examination will be BPSC. Yes, sir. Yes, sir. So first of all, just differentiate between the beam, column, and stud. What do you mean by a beam, column, and stud? How can we differentiate them? Sir, beam, column, and stud. Yes. Yes, sir. Sir, column is the vertical member, whereas a stud can be vertical, inclined, or horizontal. And beam is a only horizontal member. I think so. I am not confirmed about the beam, but I know about the column that is the vertical member, and stud is a stud may be vertical, inclined, or horizontal. Okay. But why we use a Mohr circle? What is the need of a Mohr circle? Yeah. So the main physical significance is that we have to find the induced stresses on a oblique plane. By using the formula, there is infinite number of the oblique plane, and if we are using the formula to find the induced stresses on the oblique plane, then we have to put by using the formula we have to find the induced stresses in. सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि अगर इंड्यूस स्ट्रेसेस जो भी है ऑब्लिक प्लेन में, अगर फॉर्मूला को यूज करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्लिक प्लेन है. बट सर if we are using the Mohr circle, that at one time we can find out the infinite number of the induced stresses on the oblique plane at one time, sir. Okay. What do you mean by a principal stress? Yes. Sir, as we know that the principal plane is that plane on which the shear stress is 0, and that point, that plane the stresses is acting, that stresses is the principal stress. Okay. Can you just tell me what do you mean by in plane Tom x and absolute Tom x? In plane Tom x और absolute Tom x क्या होता है? Sir, repeat again, sir. What do you mean by in plane Tom x and absolute Tom x? Okay, sir. Okay. Absolute and in plane. 1 minute, sir. Sir, absolute maximum place, it means that the difference, that is yeah. If only principal, sir, I'm not sure, but I want to try that. Absolute shear stress, if only the principal stresses are acting, then we are finding the absolute stresses. In plane shear stress, it means the stresses are acting xy plane, not principal stresses or shear stresses. Then we have to find the in plane shear stress. Sir, I'm not sure. Okay. Can you tell me how to draw the Mohr circle? Yes, sir. What are the various steps you will have to take? Yes, sir. Yes. Is it visible, sir? Yeah. Not well. You can just speak. There is no need to show me, but you can just speak it. Step number 1 is this, 2 is this, like that. Yes, sir. Let's suppose, sir, one material is there, and in one plane, let's suppose, yes, sir, one plate is sigma x is acting, and another plane in y direction, sigma y is acting, and also shear stresses are acting. Then first of all, we draw the xy axis, and in the positive x-axis, we indicate as a normal stress, positive or negative normal stresses, and in y direction we represent as a shear stress. So let's suppose one if the shear stress, sir, we let's suppose in sigma x is there, which is higher than the sigma y, and tau x is also is anti-clockwise direction. सर आई थिंक सर सबसे पहले सर स्केलिंग करेंगे सर, जो भी सिग्मा एक्स और सिग्मा आप ये अज्यूम कर सकते हो ना, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई. ओके.
There's no issue. Yeah. You know the step Yeah. जानने की, what you know about how to draw and how to find the center of the Mohr circle, what is the radius of the Mohr circle, and what is the maximum shear stress. हाँ सर, पहले पॉइंट है कि हमने जो shear stress मतलब कि जो नॉर्मल स्ट्रेस लिया हुआ है shear stress का, उसका एक हमने पॉइंट कंसीडर किया हुआ है सर। और दूसरा पॉइंट हमने फिर से जो दूसरा पॉइंट है सिग्मा वाई और shear stress का, वो दूसरा पॉइंट हमने कंसीडर किया, और दोनों को सर वो हमने मतलब कि एक लाइन से सर हम दोनों को उसको मिला दिया सर, हमने दोनों पॉइंट को। कि हाँ हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए, है ना? Now can हाँ, you दोनों tell me पॉइंट how सर। to find the maximum shear stress in this case? सर मैक्सिमम shear stress रेडियस, जो रेडियस होगा मोर सर्किल का सर, वो हमारा इंडिकेट करेगा सर मैक्सिमम shear stress। Okay. Or if I'm just going to find out the center of the Mohr circle, then सेंटर ऑफ द मोर सर्किल, what's the coordinate of a center of the Mohr circle? yes simply sir, sigma x, if sigma x and sigma y is there, so sigma x plus sigma y by 2 and 0 is the center of the Mohr circle. Yes sir. Okay. If I am just want to know the Mohr circle of a pure shear stress case, Yes sir, yes. how to draw? Pure shear stress. 1 minute. Yeah, center will be the at origin sir, and we can draw the circle from the center. Okay. If you want to draw a Mohr circle for a static fluid, how can you draw? A static fluid, so it Yeah. will be the point, Where? because on the x-axis sir, Positive, x-axis. negative. Positive sir. Why Oh, positive, not negative? sir, negative, because Why sir, negative? because sir, nature is compressive. If the fluid, if you find the pressure at a point in a static fluid, then it will be the nature will be the compressive. That's why we have taken the negative x-axis. What do you mean by homogeneous and isotropic material? Homogeneous material means the chemical composition of the material is same throughout, and isotropic material with the fluid material properties are the same in all the directions. Chemical composition is same in the case of homogeneous. Here we are just talking about in the terms of chemical composition. Chemical. Okay. सर आई एम नॉट श्योर, बट मैं कहीं पढ़ा था सर, कुछ कंपोजिशन की बात लिखा था, मुझे अभी जो अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन आइसोट्रोपिक का मुझे पता है सर कि मटेरियल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल द। Okay. If a material, if a member is subjected to a eccentric loading, है ना, eccentric axial tensile loading, so how the stress are came on that member? कौन कौन सी stresses आएंगी यहाँ member पे? ओके सर, ओके सर। इसेंट्रिक नॉर्मल स्ट्रेस, Eccentric axial tensile loading if a member is subjected to a ओके one is simply normal stress, and another one is sir bending stress. bending stress. What's its magnitude of bending stress? Sir, it can be find out by using the bending. Either it is a constant or variable, or where it is going to be at which point it's maximum. Okay sir, okay. Sir, maximum at the center sir. Maximum at the center. Yes, toward the axis के about sir, it will be the maximum. Okay. Amit, I will just give you the feedback about your snap. Okay. So I feel so you have a little bit basics are not good, but जो advanced level है वो आपका अच्छा है, मतलब आपको चीजें अच्छी पता है, बट जो बेसिक की बात करूं, जैसे कि आपसे बीम कॉलम स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट क्लियर नहीं था, इन प्लेन और एब्सोल्यूट टॉर्मेक्स क्लियर नहीं था, होमोजीनियस क्लियर नहीं था,
ये सब चीज आपको जो छोटी छोटी बेसिक्स की है ना, इट्स नॉट क्लियर टू यू, बट जो मतलब थोड़ा सा लेवल अप करे जैसे कि, तो दैट इज अ गुड थिंग, है ना. सो आई थिंक यू हैव अ नीड टू वर्क आउट ऑन योर बेसिक्स. सर ये इन प्लेन और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? बट इन प्लेन टॉमैक्स होता है एक पर्टिकुलर प्लेन के लिए, और एब्सोल्यूट टॉमैक्स होता है पर्टिकुलर एक पॉइंट पे. तो फॉर डिजाइनिंग दैट वी आर जस्ट टेकिंग द एब्सोल्यूट टॉमैक्स. ठीक है. अगर मुझे इन प्लेन टॉमैक्स निकालना है, मतलब कि मैं एक प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा उसकी बात कर रहा हूँ. लेकिन जब एब्सोल्यूट की बात करूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा उसकी बात कर रहा हूँ. और बीम कॉलम स्टड में तो These are कॉलम तो classified not on the basis of the position, but these are classified on the basis of the load. है ना? If the ओके. load is a transverse shear load, then it is a beam. If the load is a axial compressive load, then it is a column. And column is a vertical member. It's a correct. है ना? यहाँ पे पोजीशन प्लस लोड दोनों डिफाइन करने पड़ेंगे. एंड यस सर, यस सर, स्टड्स कैन बी एनी पोजीशन बट एक्सियल कंप्रेसिव लोड. ठीक है. यस सर, So you यस should clear about these things. है ना? सर. होमोजेनियस है? Homogeneous is also a material which is subjected to a same elastic property in a given direction at any point. है ना? ओके. In a given direction at any point. ओके सर. मतलब अगर x के अलॉन्ग सेम है तो सब जगह x के अलॉन्ग सेम ही होगी, y के अलॉन्ग सेम है तो y के अलॉन्ग भी सब जगह सेम होगी. है ना? ओके. But not about the composition. We are not talking about in the terms of composition. ओके सर. इन थर्मोडायनामिक्स Okay. भी ओके. हाँ बोलो बोलो, ओके क्या कहना चाह रहे. सर. आई थिंक इन थर्मोडायनामिक्स केमिकल कंपोजिशन इज सेम थ्रू फॉर प्योर सब्सटेंस. लेकिन ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम अलग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. यस We सर, are यस not सर, यस taking सर, the composition. यस सर, यस सर, यस सर. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू.